સુવેન ફાર્માના ચેરમેન અને સાથે જ સીईओ वेंकट जस्ती जुड़ाई चुका है। हाय सर, शुक्रिया जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो वेरी हैप्पी न्यू ईयर मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को। शुरुआत में इसी से करना चाह रही थी, ये क्वार्टर काफ़ी बेहतरीन रहा। मैं एक सेगमेंटल परफॉर्मेंस से शुरुआत करना चाह रही थी, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर जिस तरीके से ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से आउटलुक कैसे बनेगा, इस क्वार्टर के दौरान कौन से फैक्टर्स इतने सपोर्टिव थे, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं, मैं उसी से शुरुआत करना चाह रही थी। Thank you, and greetings to all the listeners. And yes, the specialty chemicals growth has contributed to the increased turnover this quarter. And for the next 6 months, things are looking good. We have a good order book on hand because our visibility is only for 6 months, so I can give you only for the 6 months. Even though everything is looking good, but if you could see, there is some stress on the margins, mainly because of the raw material price increases that is up to the 6 to 7%. In addition to that, and some operational cost increases, which is due to the COVID-related activities, and also to the transportation cost has gone up sky high to 4 times. And some other expenses also gone up. So these are some of the things which are playing a little bit risk in the things. But as of now, the next 6 months looks good. We are only worried about the non-availability of the raw materials, in addition to the increase in the raw material costs. That is the only thing that we have to worry about it, which will stop our production or something like that. Otherwise, things are looking great, and we'll hope to do the same thing for the first 6 months. Whatever we have done, the same growth will happen in the second 6 months also. ओके, अग्रीड सर। अच्छा, मुझे बाकी 2 सेगमेंट्स के बारे में डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपने रॉ मटेरियल का जिक्र किया, तो वहाँ से एक आइडिया, बावजूद इसके कि प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं रॉ मटेरियल के, अब जो मार्जिन्स है वो एनालिस्ट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बेहतरीन आए ही हैं। एक आइडिया उसके फ्रंट पे वो कैसे मिटिगेट होगा, आगे जाते हुए आप क्या स्ट्रैटेजीज अपना रहे हैं उसको लेकर, जिसकी वजह से थोड़ा मार्जिन हम लोग मेंटेन देखेंगे। और चूंकि ये पूरे सिनेरियो की बात कर रहे हैं, तो एक जो काइंड ऑफ लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हम लोगों ने बढ़ते हुए देखे हैं, जितनी भी कंपनी से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये हाईलाइट रहा ही है। वहाँ से सबसे ज़्यादा प्रेशर पॉइंट वो बनता हुआ दिख रहा है। इसको थोड़ा बहुत कम करने के लिए आप किस तरीके से वर्कआउट करें, एक इन दोनों के फ्रंट पे आपकी तरफ से स्ट्रैटेजीज अगर आप मुझे बता पाएं। See, to raw materials, which is not in our hand, if it is an intermediate, so we can do the backward integration and some kind of risk mitigation can be done. But the basic raw materials, which are because of the Chinese shutdown of the factories due to the COVID and the impending holidays in China in January, all giving us some uncertainty. Leading to that, in India also, a lot of basic raw materials also becoming costly, not only costly, and also sometimes non-availability. As of now, we are managing it, but we cannot stock it fully. But at the same time, there is a possibility that you may have a short-term stoppage of production if these basic raw materials are not available. But we cannot do any basic raw materials ourselves. So the risk mitigation is very much same for every industry, especially the pharmaceutical industry depends on the chemicals, both from India and from China. I think nothing we can be done, and we are crossing our fingers crossed and see that things will remain the same or improve better. But I don't see anything coming in that direction as of now. So there will be some pressure, but even with this pressure, if it remains at the same thing, and we can keep our margins plus 45%, 40% EBITDA margins in the coming 2 quarters also. ओके, अग्रीड सर। अच्छा, कमिंग बैक टू द डिस्कशन दैट वी वर हैविंग, बाकी सेगमेंट्स के बारे में आपकी क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी, स्पेशली क्रैम्स जो आपका मेन बिजनेस ऑलरेडी है, वहाँ से परफॉर्मेंस कब तक इंप्रूव होने की उम्मीद है, फॉर्मुलेशंस, नए वर्टिकल के बारे में यहाँ से क्या आउटलुक बन रहा है? The formulations, we have filed 5 ANDAs this year, and we expect a couple of ANDAs to be launched sometime in the 4th quarter. And we are preparing for more formulations.
With respect to the CRAMS, it is the success of the molecules during the clinical phase leading to the launching will give us a growth potential. But we are seeing a good traction in the existing molecules, and we are also seeing good number of projects coming back compared to last year, post-COVID. Not really post-COVID, I mean, compared to last year. ओके और क्रैम्स के बारे में वहां पे किस तरीके से चीजें इम्प्रूव होंगी? That's all the success-based activity on that one, and also the new projects accumulation, and which is happening, and we expect 10 to 15% minimum growth that will happen in the CRAMS also. ओके अग्रीड सर. अच्छा लास्टली एक चीज़ जो मैं समझना चाह रही थी सर, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कोविड के डिसरप्शन से ऊपर आ चुके हैं, काइंड ऑफ थोड़े पेन पॉइंट्स है रॉ मटेरियल प्राइसिंग की बात की, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की बात की, आप बता रहे हैं कि मार्जिन्स मेंटेन रहेंगे, तो इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन में क्या एक्सपेक्ट करूँ ये साल के अंत तक, क्योंकि 6 मंथ्स को लेकर आप ऑलरेडी काफ़ी जो पिक्चर बता रहे हैं वो थोड़ा बुलिश दिख रहा है. एक आइडिया इस टर्म्स के ऊपर ये साल अंत होते होते कैसा काइंड ऑफ फिनिश हम लोग देखेंगे, ये आइडिया आप मुझे अगर दे पाएं. We expect around 18 to 20% growth compared to last year on the whole year basis, and also about 20-25% growth in the bottom line. That's what we expect, provided that there is no sharp increases in the raw materials going forward. If it keeps at the same level, yes, this is what we are going to achieve. ओके एंड इफ इन एनी विच वेज अगर ये पास ऑन होने की बात है तो आप ये कॉस्ट इंक्रीज कितना पास ऑन करेंगे, अब तक कितने क्वांटम में हो चुका है? See, in our business model, these are all campaign based small volume activities, and from the acquisition of the project to the delivery takes about 9 months. There is no possibility of passing on the costs. But only when we take up the new projects, then we can put the new costing into the picture. So that's why you see this margin pressure. Otherwise, unlike generics, we cannot pass on the costs at this time because these are all small volume and high value products. Okay. Agreed, sir. Acha, last thing, in terms of industry parameters, what is the kind of average industry growth that can be witnessed given the condition that we have already talked about Suven Pharma? एक sectoral kind of growth अगर आप मुझे idea दे पाएं किस तरीके से emerge हो रहा है? See, compared to last year, this year the industry growth will be a little bit less in the sense because last year a lot of people has taken a lot of medications, fearing that they may not be available and all that stuff. So a lot of inventories are being created at the industry level also. So and offtake is less in general. So it will be if we could maintain the last year's growth would be great. But I feel 1 or 2 percentage points is less than the last year's growth for the total pharma industry, in my opinion. I may be wrong.